पहुंची एवं जो मूल सिद्धांत रे पहुंची से विषय रविकांत जी को अनुरोध करके कुछ उत्तर देवे। रविकांत जी एकदम एकदम सर आपको बताना चाहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय का इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में लैंडमार्क ऑर्डर आया था 2018-19 में, जिसमें ये कहा गया कि चाइल्ड मैरिज में सेक्सुअल ऑफेंस होता है और उसमें पॉक्सो के सेक्शन लगाना चाहिए। इट इज सेक्सुअल अब्यूज ऑफ माइनर्स। ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, इट इज द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। परसुएंट टू दैट द बीएनएस हैज आल्सो बीन अमेंडेड और उसमें भी ये बात को लाया गया है कि चाइल्ड मैरिज में अगर बच्चे का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है in the course of child marriage, sections of POCSO will be used. So it is the jurisprudence of the Honorable Supreme Court of India that child marriage में ये sexual offense होता है, इसलिए it is sexual exploitation of children also in domestic scenarios. Thank you. हमें लॉ सहित आलोचना करिवे कि हम इमोशन रो स्थान नहीं। लॉ कोन कहूची? लॉ कहूची माइनर कंसेंट इज नो कंसेंट। जड़े अप्राप्त वयस्क झील जदि कंसेंट भी दौची ता कंसेंट भाव में आईन में ग्रहण योग्य नुहे। तेणु से प्रथम तो सोशल मीडिया एटा प्रकाश करने उचित ही नहीं। द्वितीय जदि भी से कंसेंट देता है आईन विरोध बोली ग्रहण करा जाए, बापा को अरेस्ट करा जाए। आम दृष्टि रे पुलिस ठीक पदक्षेप लेछि एवं एटा को गोटे धर्षण भाव में ग्रहण करके कोर्ट निश्चय न्याय दब बोली हम विश्वास करते। An imminent danger of getting married is a child in need of care and protection as per the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act. So there is already a law on it, and even the Supreme Court in the guidelines has talked about children and not only the girl child. Though NFHS data as across the country focuses mostly on girl child, that is why the discourse on that, but in no way the issue related to boys can be sidelined. That is also a very important, and the JJ Act has taken care of that. Any child who is in imminent danger of child getting married is a child in need of care and protection. इस चीज को समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट, I was there in the court that day when the Chief Justice gave out that judgment, and the court said that it is a sensitive issue. The court said that though we agree that prosecution होना चाहिए, law को act करना चाहिए, but more emphasis on prevention. Or it is a very sensitive issue. It has to be dealt with sensitively. Law is an enabling tool, and therefore the court, specifically the Chief Justice of India that day, mentioned that in the open court that community-driven approach. So the court is aware that it is a sensitive issue. The court also has emphasized on empowering of the girl child, sex education in schools, and all the related issues with adolescents. So all the things have been taken care of in this judgment, and I think that that is why the comprehensive blueprint has been prepared by the court. So it takes care of everything. In one of the guidelines, the court has also directed the Government of India, Ministry of Home Affairs, Ministry of Women and Child, and Ministry of Panchayat Raj and Rural Development, 4 ministries, to provide budgets and also programs for getting this whole blueprint implemented. So as activists, as people working across India, we are this judgment, which is law of the land now, with the Honorable Supreme Court of India orders, it's now a law, and that will help us to reach out to most of the state governments and the central government to see that these national and these action plans are prepared. And with the order of the court, we are hopeful, and we know that many states will earmark budgets and schemes for getting this social evil eradicated. A order of such magnitude helps
many state governments to come out with action plans. It provides a mandate. So any backtracking by any state can now not be done because it's law now. And we will So how many states have already have action plans? see many states across the country, we are aware, that have conditional cash transfer schemes for the girl child. In Madhya Pradesh it is Ladli, in UP it is another name, in Bengal it's Kanyashri, I don't know, Odisha must be also having. Odisha has. Yeah, so everywhere there are conditional cash transfer schemes, but with this order, I think there will be more allocation of budgets by the state governments to combat this evil, and also involvement of schools, involvement of Panchayat Raj can be ensured, Panchayati Raj systems can be ensured. Though it is only a blueprint and an action plan, ये अभी action plan है, एक law है, implementation will happen with all our partners who are working across the country. We are now going to engage very strongly with the state governments and the central government to get this implemented. Sir. Thank you. जी ने और निर्मल गुराना जी हमारे दो एक्टिविस्ट जिन लोगों ने अथाह मेहनत करके ये सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट लाया, खास करके अलका साहू जी जो एक बहुत ही दूर दराज के इलाके से आकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा कर और ये लैंडमार्क ऑर्डर जो लाए हैं उससे पूरे देश भर में एक नई एनर्जी आई है जिससे कि बाल विवाह को रोका जा सकता है। ये एक लैंडमार्क ऑर्डर है जिसमें पंचायतों को अकाउंटेबल बनाया गया है, स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन की बात की गई है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन है, ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट की बात की गई है, बजटरी प्रोविजंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स की बात की गई है, एक्शन प्लान बनाने की बात की गई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर्स बनाने की बात की गई है। ये एक सोशल ईवल है, इसमें सबकी भागीदारी की ज़रूरत है और यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे लोग जितने स्टेक होल्डर हैं सबको मिल करके ये सोशल इवेल को ख़त्म करना है। और हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अलका साहू जी के स्पिरिट का, जो इतने दूर दराज के इलाके से जा करके कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा करके एक ऐसा ऑर्डर लाई है जिससे पूरे देश में एक एनर्जी आई है। तो हम लोग उनको फेलिसिटेट करना चाहते थे और वो हमारी साथी हैं जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस और बाल विवाह मुक्त भारत के साथ मिल करके वो पूरे देश भर में, उड़ीसा में भी काम करेंगे और देश भर में भी काम करेंगे। और हम अपने सारे पार्टनर्स जो हमारे उड़ीसा में हैं, पूरे देश भर में ये बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन चल रहा है जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस की तरफ से, हम लोग उसमें ये जो जजमेंट आया है इसको इम्प्लीमेंट करें। सारा भारत वर्ष क्षेत्र में बालिका मैंने बाल्य विवाह सारा भारत वर्ष प्रत्येक गाँव आम बाल्य विवाह मुक्त गाँ एवं पंचायत हो पार एवं स्वाधीन और मुक्त रूप में आम बालिका मैंने पहुँची पार। नियम था 2006 बाल्य विवाह निरोध आईन, किंतु सेटा प्रकृत भाव में सीएमपीओ आमर पंचायत रे जेकोसी क्षेत्र में ये नियमटा प्रकृत भाव में लागू हो पार ना। तो मो मन में गोटे आसला 2013 जो आम शिशु सुरक्षा राज्य में काम है ताले शिशु मान बहुत चाइल्ड मैरेज देखा दी, तेणुक मोर मन में गोटे आसला चाइल्ड मैरेजटा गोटे शिशु मान गोटे स्वाधीनता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवनगत बहुत प्रभाव पकाଉଛି एवं ये गोटे मन में चिंता आसला भाविली हाईकोर्ट नक बर सुप्रीम कोर्टे जदि बाल्य विवाह